Good afternoon. On behalf of Jacksonpal Pharmaceuticals Limited, makers of equilibrium tablets of chlorodiazepoxide NMG, during the COVID times, treat anxiety with equilibrium tablets. In the fight against coronavirus, Lycorate salt provide the required defense to boost the immunity, and Nari calcium tablets for today's Nari. I am Dr. Vipin Tyagi along with my teammates Dr. Deepika Chabra and Mr. Amit Saxena. We welcome you all to the third episode in the series of COVID and Stress webinars, an initiative of Indian Academy of Cosmetic Dermatology and Gynecology, IACDG, by founder President Dr. Ragini Agarwal. Let's fight together. We welcome the esteemed faculty present with us today, Dr. Chandan Kachru, Dr. Ujjwala Kedar, and Dr. Munia Bhattacharya. Welcome to all attendees. Please post your queries by text in the Q&A box to be answered at the end. Please note this webinar is streaming on Facebook Live and the recording will remain on Jackson Pal's YouTube channel for reference and promotion. Requesting Dr. Ragini Agarwal ma'am to initiate the program. Thank you. Thank you, Vipin. And thank you, Jackson, Pal, Deepika, and Amit for giving us continuously this platform. Yes, together we can win any problem. Together we can cross anything. And this is very, very necessary whenever we talk about anything regarding mental issues or stress of any kind. Today, with this pandemic of more than 1.5 years, the whole globally, everyone is suffering in some way or other. And stress is a paramount. When we talk about the stress, it is already in the atmosphere too much. Everyone, from the small child to a elder person to a corporate, non-corporate, everybody was under stress in the society and having lots of problems. Otherwise, also stress is a problem which is less recognized in everyone. And in some way or not, anyone can have a mild anxiety, mild depression, but sometimes it is a reflection of inside personality. And with COVID, what happened? It has brought a physical pressure, a disease which causes a changes in your inflammatory process, in your immune process, and which leads to a permanent changes in your neurological behavior also. And along with that, the collapse of the complete business of many kind put another type of a social pressure. So this COVID and stress is a deadly combination which is accelerating a mental issues. So in the next few slides, I will discuss something which I can perceive what literature has seen and what I am seeing in my day-to-day life as a doctor. Then we'll go and have a talk by Dr. Ujjwala, who has joined us from Maharashtra. And she is going to tell how this stress is specifically affecting the new mothers also. Then we are going to have a coping strategy. It is our typical way to discuss something about general public, something about specifically mothers, because their mothers, we know that are very, very important place in our community, because every mother, they really have a complete burden on their shoulder. If a mother is not intelligent enough, the child is going to suffer. And not only this, a growing fetus inside a mother whose mother is an anxious mother, under depression mother, will transfer the everything to that baby, and the baby come in this world as a jittery person. So at the end, we talk about some coping strategy led by Dr. Chandan, and she every time she has a different discussion. Today, she is discussing with the head of clinical psychology, W. Pratiksha Hospital, Dr. Munia. With this, I will start my presentation about what we are talking about making mental issues. मैम full slide show हाँ, please. वही कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, हो गया. So many people may be facing increased levels of alcohol and drug use, insomnia, and anxiety.
in general also, and maybe because of some stress. It also leads a type of mental stress exacerbation. Secondly, COVID-19 itself can lead to neurological and mental complications such as delirium, agitation, even stroke is also reported. It is not me who is saying. I have read many articles by reputed journals on the net, and from there I have taken these experts. And people with pre-existing mental, neurological, or substance use disorder are most vulnerable group to this SVS infection. They may stand a higher risk of the severe outcomes and even death. We all know they are already walking on a tightrope, and this literally give them a dhakka and they fall on the other side. And secondly, in this COVID, they are not able to reach their healthcare provider. Many a time they are not able to get their medications, so it will cause more of the problem. So this particular thing I read in an article, which I really want to share with you to understand what type of the problems this COVID-19 is causing to the population. A woman had seen lions and monkey in her house. She was becoming disoriented and aggressive towards others and was convinced that her husband was an imposter. She was in her mid 50s, decades older than the age at which psychosis typically develops. So usually psychosis develop between 35 to 40 years of the age. Any person who is vulnerable group, usually their this disorder which is suppressed can develop at this age, but here it was in the 50, not the right stage of the developing a suppressed disorder and no history of the psychiatric history. But she has COVID-19. Hers was one of the first known cases of someone developing psychosis after contracting the disease. So although virus can invade and infect the brain, it is not clear whether SARS-CoV-2 does so to a significant extent. The neurological symptoms might instead be a result of overstimulation of the immune system. Virus तो चला गया, लेकिन अपनी जगह छोड़ गया. It is crucial to find out because these two scenarios require entirely different treatments. That's why the disease mechanism are so important to know whether it is really a viral invasion causing the problem or it is a immune system which is modified because of the virus invasion and causing the problem. Not all people with neurological symptoms have been seriously ill in intensive care units either. So this is very important to know. These are not the all person who are seriously ill and gone in the ICU. So anything can happen to them. No, we have seen this group of younger people without conventional risk factor who are having strokes and patients having acute changes in the mental status that are not otherwise explained. And secondly, when we talk about the social thing, sometimes it takes a natural disaster to reveal a social disaster. As one quote has said, so this COVID-19 and its psychological aftermath is really, really very deadly. Mental health issues in the wake of this pandemic are on the rise everywhere across the world, spanning all ages and the economic strata of the society. एक झटके में सबको बराबर कर दिया. So there is increasing prevalence of depression, anxiety, sleep, and stress disorders among medical as well as non-medical healthcare personnel, children, older individuals, and general population as a whole. What WHO says, a substantial investment is needed to avert a mental health crisis, which is really has come. Still, we are not recognizing that many persons are undergoing with a mental health crisis, and it will be increased if we are not address it and not going to talk about it. What are the at-risk groups? It includes patients contracting the disease and their relatives, children confined to their homes and quarantine centers for prolonged periods,
Elderly individuals, especially those in the need of caregiver support or otherwise, women juggling between home schooling, working from home and household tasks, people already suffering from an underlying psychiatric problem. So it is not affecting a person who has already something in the mind, but because of the so much pressure is going to be on everyone, it is causing a havoc. And over and above this social problem, if you contract the disease, it itself a reason for the mental disorders. So what are the socio-psychiatric problems? It has multitude factors. Social isolation. It's a big thing. A person is totally bound to the home. Those even the young childrens, they are so sick of not going to school that they are saying, "Oh my God, मेरा school खुल जाता," जबकि वो पहले school जाना ही नहीं चाहते थे. Then fear of contracting infection, that is also one thing. Loss of near and dear ones. We all know this COVID wave too, what it has caused. So many people has gone. It's so difficult to even think whether it is not your near dear one you are listening daily. One person is going. It causes lots and lots of pressure in your mind. Growing insecurities regarding finances. Enforcement of the strict public health measure curbing personal freedom. So, as far as we frontline health workers are concerned, we are at greater risk of coming down with the mental health issues because there's a bearing the burnt of the excessive workload, which nobody understands. Whatever they say, no person on the earth, if he himself is not a healthcare worker, whether doctor, whether paramedical, whether nurses, or a close family, they cannot understand at what atmosphere these doctors are working, and all the time everybody just putting a finger on them that they are lutera, पैसे खींच रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं. So understand a way they are sacrificing their life, and they are having this threat also. Uncertainties of the prognosis. We don't know anything about COVID. It is changing every day. If today I'm giving a SCQ, today it is banned. And am I at fault if I am giving SCQ? If it is today not in the line of the drug, I don't think I'm at fault. I haven't killed anybody. Whatever the Ramdev say, we haven't killed anybody. Shortage of the resources for testing. Treatment and the personal protection. That is the most important thing. We have worked without masks, without gloves, without anything, and no protection. If we are sick, we have to pay from our own pocket. Feeling of quandary, dilemma about the health of the self and the family. I know many people who have separated themselves from the whole family. When they come to the home, they live in the separate room, and their food is also delivered there. Think of their agony and the stress, discrimination, prejudice, and stigmatization, which stupid people have done. They have thrown out the many residents who are the living in the many societies. There, who everything was thrown out like they're something like untouchable, and nobody has come forward to even protect them. But we are health workers, we are working, and we will work. Children and adolescents, how they are coping. Being confined to their homes for the prolonged periods increases irritability, restlessness, nervousness, and lack of concentrating abilities among children. Exposure to widespread fear propelled by the rapid spread of the virus, compounded by constant news chatter about death and disease. Parental loss during childhood does go a long way in the development of the mood disorders, psychosis, and the increased suicidal rates in the future. I have at least know 4 families where both parents are died and children are orphaned. Even there's one family, there's no near dear, no very close relative even to take care of them. I know one family where mother has died,
father has divorced and that child is with the very, very old grannies. Now think where that child is going to grow. Growing evidence of the household violence and the child abuse. Children with disabilities, those staying in the crowded settings and the living on the streets are deemed particularly vulnerable. For an entire generation to grow up in these conditions with no clear answers for the foreseeable future is unprecedented and will inevitably have a significant impact on their outlook. So today's pandemic, its effect is really going to a long way, going to change the complete generation. And that complete generation is going to even have an effect on the next generation also. And what other related problems we are facing? Elderly population is not tech savvy. They require regular contact with their physician due to their comorbidities in form of the teleconsultation. What they will do? Acute shortage of the drugs because of the interruption of the manufacturer, transport and the business. And if, God forbid, if they have some real problem, it's very difficult to get any cab and many times any bed in the hospital also. Now, I will talk about the existing mental issues. People already living with an existing mental illness are most vulnerable to continuous media reporting about the wavering situation. People already living with a chronic psychiatric problem are unable to access care they would normally require to function in a stable way. Rising incidences of the addiction and the substance abuse is there, and we all know they are vulnerable to be victim of the substance abuse, and it will really going to increase their problem more. Inability to acquire their maintenance medicines if they are acquiring these medications from far from their house, from some government center, it is so difficult to go there. And many government centers has totally changed into the COVID hospital, being forced into a confined situation, lack of psychological counseling sessions, shutdown of the outpatient department everywhere, reduced visits from the caregivers have put those met in need at risk of falling through the cracks and have inflicted on the countless others newfound grief, anxiety, depression, and inclination towards self. Social distancing, limited celebrations, and unavailability of the addictive substance can lead to alarming withdrawal symptoms in many. Resorting to binge watching of the television, spending a large part of the day on electronic gadgets, laying a substrate for the development of the behavioral problems in the long run. So if we see everything what is happening today is going to effect on the population in some way that most of the us are going to have some level of the mental illness, and it's a time when we should only and only focus on it and talk about it, chalk out some coping strategies, whether in the form of the some developing new hobbies or exercise or diet. We have to do something, otherwise it will be a pandemic of the stress and psychiatric disorder in the community. Apart from the pandemic related psychological distress, the direct effect of the infection itself and the resulting host immune response to the CNS and its neuropsychiatric sequelae should not be overlooked. Let's see in it. Strokes and encephalopathies often have acute and subacute neuropsychiatric sequelae. Long-term neuropsychiatric deficits following acute neurological disorders are also not uncommon. Various biological alterations associated with the coronavirus infection have been identified, and some of them, especially those related to the activation of the microglia and cytokinin signaling, might be of relevance to the specific mental health outcomes. If you remember, if anyone of you have listened our previous episodes, we have very clearly told you
how stress causes a changes inside us. Lots of transmitters, chemicals are secreted, which affects our immune system, endocrine system, and inflammatory system. And not only this, the plasticity of the hippocampus is changed. There is a complete change behavior in your neuroglia, in your brain also. And more of the cytokinin alterations are being recognized as common findings in the mood and the psychotic disorders. Then quarantine, it's a very, very known word today. So it could cause an adverse mental health outcome. These include symptoms of the PTSD. Now a person is quarantined. He has so much time to think. मेरे बचपन में ये हुआ, मेरे बचपन में वो हुआ, मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा. And because of all this thing, he has weaved something in his mind. And along with this, all stress and maybe some neurological changes, it is precipitated like a big volcano. So symptoms of the PTSD, which might be the person is having, but able to curb it, it will come out like any volcano. Depression, anxiety, sleep problems, increased fear, stigmatization, low self-esteem, a lack of self. So these all things leads to a, because of the quarantine, because of the time, the person who is already having a little bit problem can be flare like anything. So now I am coming to a small part to touch what happened in utero COVID infection. In the first wave, we are not clear that COVID is causing any problem to the baby. But today we are more aware. We know that we have sudden oligohydramnios, we have sudden IUDs, we have sudden post-maturity of placenta. Few patient has come as a APH, something like maybe little bit retroplacental fluid, and abortions has increased. Not only that, we have really now come up with a big guideline that yes, congenital COVID can be possible, and even a baby can develop those problems, those inflammatory problems after 3 months, 4 months, 6 months also. So non-specific maternal immune activation might also be associated with impaired neurodevelopmental trajectories in the offspring. Although it is a hypothesis today, maybe it is proved afterwards, but still scientists are started thinking on this thing also. Exposure to viral infection in utero, childhood or even adulthood place individual at increased risk of the schizophrenia later in life, what we know from our previous viral infections. So maybe this disease also. Mental health professionals are facing overwhelming challenge due to a lack of sufficient resources, proper protocols in the guidelines, and are in quandary as to how to provide mental health care in isolation units and the hospitals. So just to conclude, how do we terminate this relentless turn of the event? This is a big question in front of us. I want these answers from the mental health professionals. Are we going to be dragged into this unfathomable abyss of the destruction eventually? Dear WHO, please answer. It is what we do today that will reflect in our future that we have to think. It is the best saying which I have ever read. Everything what we do today will reflect in our future. The need of the hour is to identify these potential problems and prepare us to combat them in two ways. Timely mental health care is necessary. The integration of the mental health crisis, intervention with the general disposition of disease prevention and treatment is of indispensable value. Multidisciplinary mental health teams, both at regional and national level, should be able to provide care to patients and healthcare workers. Large-scale studies need to be conducted and references taken from previous experience of the pandemics to guide appropriate action.
It is advocacy for the government and the WHO or regulatory body. They should see in it. It is critical that people continue to have access to treatment and to be provided with the correct information to reduce discrimination and the social stigmatization. Prolonged uncertainty has led people to feel a little more anxious. So people who were on a mild anxiety spectrum earlier have moved to moderate and severe anxiety. When anxiety gets severe, the kinds of behavior of self-harm increases, leading to more of the suicidal thoughts. So my dear friends, unless this pandemic is attended to at this critical hour itself, the post-COVID-19 landscape will be a fertile breeding ground for an increase in chronic stress, anxiety, depression, alcohol dependence, and the self-harm. Thank you so much for your patient hearing. I'm so happy we have 40 plus people watching us on a day when everybody was involved with a grand IMA function where our respected president is Prime Minister Mr. Modi is addressing them. And here we are talking about the mental health problem with which our society is suffering. We are more concerned about it. And Deepika, can you say, show what I want to? This is, I want to ask to everyone. Question mark, happy Doctor's Day. We are also human beings. We have right to live with dignity, with prosperity. We are the best students of the class. When everybody is dancing in the club, we are mugging our books. We give our 20 years to become a doctor, to serve you. When everything has changed, why that old stupid Hippocratic oath is still on our head? No, the day CPA has come, they are consumer, we are shopkeepers. So why I want a 365 days of happy Doctor's Day, the smile on our next generation, not these red band-aids. For the next session, we have Dr. Ujjwala. Ma'am, the stage is all yours. Good evening, ladies and gentlemen. I thank Dr. Ragini and other organizers for giving me this opportunity to share my thoughts on postpartum depression during COVID. Having a baby is a life-changing event, and it can trigger many different and powerful emotions. Being a new mother means going through enormous transition in life, besides undergoing those erratic hormonal changes in the body. There is often an expectation that having a baby should be one of the happiest times of the life. And while joy and excitement is common, so is fear and anxiety. What happens at times, fulfilling the expectation of being a doting mother gives nightmares and inability to get proper sleep, to recover from birth-giving woes, making susceptible to exhaustion and physical discomfort. As such, pregnancy and the postpartum period are considered the most turbulent times in a woman's life, as they are susceptible to mood disorders like depression and anxiety. And if such conditions are kept unchecked for a longer period of time, then it can lead to severe postpartum depression. A word about baby blues. As many as 50 to 75% of new mothers experience a shift in their emotions, which is called as baby blues. It occurs after delivery, and it is typically seen in women who are at an emotional level, in which the emotional levels are high, or we can say the sensitive women. These are mild mood changes in the first week after having a baby, but these findings are self-limiting. 15% of them experience severe and long-term depression or anxiety, so labeled as postpartum depression and postpartum anxiety. How is postpartum depression different from baby blues? Because many women get confused between these two things. So baby blues are feeling of worry
unhappiness, and fatigue, which many women experience after having a baby. Because baby requires a lot of care, and it is normal to be worried whether I will be able to give that much care. Will I be able to know when my baby needs milk? Am I going to just press the baby while sleeping? So many things. How will I go with the changing of nappies every hour or half an hour? All these, they feel very difficult and feel tired from providing that care. Baby blues include feelings that are somewhat mild, last a week or two, and go on their own. If she has been asked to take a break or a nap or eat properly, usually that helps and the baby blues go away. But postpartum depression is a severe kind of, and it lasts for a really longer period of time if not monitored properly. So, by definition wise, what is postpartum depression? Is a complex mix of physical, emotional, and behavioral changes that occur after giving birth that are attributed to the chemical, social, and psychological changes associated with having a baby. WHO has done studies, and a systemic review and meta-analysis has come to the conclusion that the prevalence of postpartum depression in Indian mother is 22%. 8 studies included women reporting depression within 2 weeks of delivery. And women also appear to be at increased risk of developing depression by as much as threefold in the first 4 to 6 weeks after birth compared with remaining postnatal period. What are the causes of this depression? It is different from typical depression and anxiety, definitely, and there is not enough research on what exactly causes PPD. But yes, low serotonin and hormonal shift that happens around pregnancy, delivery, and during breastfeeding. Early parenting also has elements related to poor mental health outcome. If a woman is to depression or anxiety, it can be worsened by lack of sleep and hormones. So many factors come into play, like sleep alterations, psychosocial factors, neuroimmune factors, hormonal alteration, genetic, and they all lead to postpartum depression. What are the symptoms of postpartum depression? Emotional highs and lows, frequent crying, fatigue, guilt, anxiety, and difficulty in giving care to the baby. They feel unmotivated, completely exhausted, and unable to accomplish even a small task. If anxiety or depression make them irritable, then it may lead to deep anger also. Persistent low mood, lack of interest and enjoyment in usual activity, low self-esteem, lack of energy. In addition, they may feel as they are a bad parent and won't be able to cope with their baby and may feel indifferent to their baby. But good part of this postpartum depression is that it is treatable. What are the risk factors? Because unless until we know the risk factor, we won't be able to diagnose it as it should be diagnosed in pregnancy so that we should be able to cope with the postpartum depression. So in any lady or any mother who has history of previous mental illness or family history of mental illness, a stressful life event, even during pregnancy or soon after birth, like job change, moving divorce, death of a loved one, traumatic labor and delivery, or any other medical complication to mother or the baby, even mixed feeling about the pregnancy. Some they feel that the pregnancy is unplanned. So they feel all the time that this baby I didn't want. In that condition also, the anxiety goes at a higher level and can lead to postpartum depression. Isolation or lack of emotional support from the family and friend, alcohol, drug abuse, medical complication, they all lead to a level of stress. Poor social support, having more than one child, financial instability, having a poor relationship with their partner, history of abuse like physical, sexual, emotional, and neglect, experiencing infant loss in the form of miscarriage, stillbirth, neonatal death, birth trauma, emergency cesarean section, post-birth complication, all can have
an effect on the patient's mental health. How to detect now PPD? The United Kingdom's National Institute for Health and Care Excellence suggests two-stage screening with the use of a sensitive two-question screening tool for depression. If we get a positive result, then we should do a more definite assessment. So American College of Obstetrician and Gynecologists, American Academy of Pediatrics, US Preventive Service Task Force, all they recommend routine postpartum screening using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. So what is that? We need to ask first two questions, and if we get have you been bothered by little interest or pleasure in doing things? If we get positive answer to either question, then we should go to Edinburgh Postnatal Depression Scale. And if we get the score of 10, or if we get a positive answer for 10th question, what is that? The thought of harming myself has occurred to me. Means if they feel or if they go for harming themselves because of this baby or after delivery, then we should take as a we should go for a more definite treatment and more definite assessment. Disease, what is the disease course of postpartum depression? It is natural duration of PPD is variable. Most cases resolve within a few months with treatment, but 24% of women are still depressed for 1 year after giving birth, and 13% remain depressed for 2 years. About 40% of women with PPD will relapse either during a subsequent pregnancy or unrelated to pregnancy. Untreated PPD is likely to repeatedly recur as depressive episodes, resulting in ongoing problem for mother, child, and for family as well. One word about postpartum psychosis. This usually occurs within 2 weeks of giving birth and are similar to general psychotic symptoms like delusions and hallucinations. It is a severe form, and these women may have thoughts of hurting herself, even her child or her partner. It affects usually 1% of new mother, though rare, but if present, immediate professional help will be needed. So management, stepwise management is recommended. In mild form, self-care, sleep protection, exercise, psychosocial support strategy is to be given, and in a moderate, CBT and IPT, that is cognitive behavioral therapy and interpersonal psychotherapy. In severe form, we go for SSRI or electroconvulsive therapy. I'll tell you in detail all these. So in mild form, we give psychosocial intervention. This strategy includes peer support and non-directive counseling from a professional. Peer support highly acceptable, and it may reduce PPD symptoms on its own. Non-directive by professional or by paraprofessional. It may reduce symptoms, but not to the extent of psychological or pharmacological. Psychological interventions, various psychological interventions have been evaluated, like cognitive behavioral therapy and interpersonal therapy. Both are time limiting. Pharmacological intervention, SSRI. If SSRI is not effective, then we can switch her to serotonin SNRI, that is serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, and mirtazapine appears to have minimal passage into the breast milk. And for severe, we go for somatic therapy, that is electroconvulsive therapy. It's a most effective treatments in psychiatry used to treat severe PPD, and it requires general anesthesia and can have side effects as memory impairment. Now, coming to the main topic, that is postpartum depression during COVID. There is definite rise in postpartum depressions are seen during this pandemic time. And it has also been observed that 1 in 7 women experience postpartum depression. The age group affected is mostly 35 to 40 years old. While there hasn't been enough time for large-scale studies on the connection between the pandemic and PPD or PPA, small studies have shown
an increase in anxiety and depression during pregnancy due to COVID-19 pandemic, which is associated with intensified postpartum symptoms. What are the reasons behind increase in this depression during COVID-19? As Dr. Ragini has told, there is uncertainty and anxiety prevailed in the society during this COVID-19 global pandemic. It's also increasing the level of stress and fear of social isolation. What will happen? Even my daughter is pregnant. Uh, she had infected with the COVID. She was positive and was got admitted, and now she's in again fear of the third wave. If this will happen, how will you, mama, come to me to give me support? So this is the social isolation in the pregnant women and new mothers is resulting in increasing level of stress and fear. Negative environment because of COVID-19 and all over the news are bothering continuously from all social medias. Nuclear family, lack of manpower support, near ones are not able to visit because of lockdown, getting exhausted easily due to household work, professional work, and baby care as well. Lack of adequate sleep, insecurity to opt for medical facilities during any emergency because of COVID situation, fear of losing job in these unprecedented times. Home confinement and a lot of stress is involved in managing motherly duties and household chores where spouse is not helping each other. Even women are seen coming with a complaint that the family is not supporting, they are not cooperative, your husband is busy and he is also not cooperating. Physical abuse has been seen increase during this COVID-19 even for the delivered mother. So how to deal with such patients? Patients are usually counseled that it is a normal thing to happen and is due to sudden withdrawal in hormone. If that doesn't work, they are sent to clinical psychiatrist, and if needed, they are given antidepressant for PPD. In fact, the family is also counseled to help the patient to overcome it. The other step can include providing emotional support, encouraging work distribution between the couples to give both physical and mental rest, especially to the mother. Adequate sleep is required, hydration, high protein rich diet, supplementation is to be given to the delivered mother like iron, calcium, vitamin D3, protein, and multivitamins. Assurance regarding easily accessible healthcare facilities at the time of need. This is the usual question which is being seen asking by patients, delivered patients. How do I know that if I am dealing with postpartum depression or if I'm just adjusting to hormonal changes after delivery or dealing with other COVID-19 related stress? The short answer, unfortunately, you can't know for sure. Our brains don't work that way. They interpret all stress as just that, stress. So it is especially hard to determine what exactly is bearing on during the pandemic because general stress and anxiety levels are definitely heightened for many people. So facing this uncertainty of today's world on the top of already vulnerable transition into having a newborn can be a heavier burden than only dealing with one thing at a time. That means you have already a postpartum depression in a normal course or baby blues in a normal course. That too, due to this pandemic, you have a fear of isolation, not getting proper care, whether I will get the ambulance, if I'll start getting any type of complications, then all this uncertainty which is proceeding in the today's era leading to highest level of depression. Actually, not the stress, but the depression is seen mainly in this pandemic area. So pinpointing the exact reason why you are struggling right now is not important. What is important? That what is the solution? What matter is the solution? So what we supposed to ask the patient to do? You manage your stress, you look at it and try to view it from distance that yes, I am stressed. I have to go with to overcome this stress and fitting in a sleep.
whenever possible are two of the best things you can do for yourself. This we have to tell to the patient, patient of postpartum depression during this COVID era. Having a new baby is hard, especially during a pandemic and the time of great uncertainty. So don't be afraid to ask for help when you need it. Ask trusted family and friends who have been taking measures to stay safe from COVID-19 to come and help out with the baby. So you can try to squeeze in and out. Take things as they come. Remain flexible and avoid putting pressure on yourself as much as you can. It is not your fault for feeling low and asking for help. It is a sign of strength and not the weakness. You need and even deserve to find someone who supports you. There is also a lot of ongoing online mom groups and virtual meetup that can be helpful if getting out of the house is not an option. If you are not able to go out of the house or to you are not able to get the consultation from a doctor, then you can consult online. Even though you can form a group and can share your problem. You can even the discussion with the same kind of people will give a rent to the your stress. So basic self-care can go a long way in helping you feel in control. So make sure you are drinking water, eating food that will fuel you, and getting some fresh air each day. Wonderful, Ujjwala. Really, it's really a nice presentation. Thank you so much. So we'll move on and we'll go the last part of today's presentation. And to continue with the series of our COVID stress parts, welcome to this extended discussion now. After hearing the risk factors and other factors of COVID stress, then the postpartum depression, we go to the next topic of post-traumatic stress disorder. So I have with me Dr. Munia Bhattacharya. She's the head of the Department of the Clinical Psychology at Devil Pratiksha Hospital, Gurgaon. Dr. Munia, welcome to our discussion. You will agree with me that after the COVID, this is the most important part now, post-traumatic stress disorder, which is happening in many people, and people are stressed so much that they don't know what is going to happen in the future, what happened with them, what is happening with them, all the three together. So can you please explain in simple terms, what does post-traumatic stress disorder mean? PTSD, Dr. Chandan is asking about PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. कभी कभी हमारा होता है कि किसी भी टाइम हमारे वो फ्लैशबैक्स आते हैं कि हमारे पीछे क्या हुआ, समथिंग चाइल्डहुड पीरियड में रेप होने लग जाते, रेप हुए हैं किसी बच्चे को, तो वो फ्लैशबैक आते हैं कि मुझे ये हुआ है, और वो आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट नहीं हो पाते हैं बिकॉज वो फ्लैशबैक आते हैं. या पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्टपार्टम में जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि मेरे पास जैसे पेशेंट आए हैं और बोले हैं कि मैं वो सीन भूल नहीं पाती हूँ जिसमें मुझे आइसोलेशन में रखा गया है, मैं रो रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है, मुझे आसपास के लोगों की चीख सुनाई दे रही है, इमीडिएटली डेथ हो रहे हैं, तो आफ्टर कमिंग होम मेरे वो सारे फ्लैशबैक आ रहे हैं.
कि मैं उस समय अकेले वहां पड़ी हुई थी, लेबर पेन में तड़प रही थी, कोई डॉक्टर आ नहीं रहा था बार बार क्योंकि उन्हें भी डर हो रहा था। तो ये जो फ्लैशबैक हमारे बार बार आते हैं माइंड में, वो हमारे लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। That can occur in people who have experienced or witnessed a traumatic event such as natural disaster, a serious accident, a terrorist attack, or rape, or who have been threatened with death, sexual violence, or serious injuries. जैसे कि डॉक्टर मुनिया ने बताया, ये भी एक पैंडमिक है और इससे हमें काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। सो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं डॉक्टर मुनिया। पहला होता है इंट्रूजन। सो ये इंट्रूजन क्या होता है? एक्चुअली जो फ्लैशबैक्स आते हैं ना, जैसे हमें लगता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है, या हम लोग पुरानी चीजों को लेकर, ट्रॉमेटिक इवेंट को लेकर जो फ्लैशबैक्स आते हैं, it flashbacks may be so vivid that people they are reliving the traumatic experience or seeing it before their eyes. मतलब उन्हें लगता है कि मुझे अपने आंखों से वो दिख रहा है, वो बिल्कुल सामने आने लगते हैं। कभी जैसे कभी इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है कि उन लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल पकड़ के इस तरह से मुझे ड्रैग किया था कि वो सीन मुझे हमेशा याद आता है। तो वो जो विविडली पिक्चर सामने आने लग जाते हैं, दैट इज इंट्यूशन, जो हमारे फ्लैशबैक्स होते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। यानी कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो उसको उस कोविड के बारे में जो गलत, जो नेगेटिव इमेज बन गई है, वो उसको बार बार याद आता है, वो भी आ सकता है ना। सो नेक्स्ट इज अवॉइडेंस। ये अवॉइडेंस क्या होता है? Avoidance means avoiding reminder of the traumatic event may include avoiding people, places, activities, objects and situations that may trigger distressing memories. Like जो मैं वो ड्रैग वाली बात बता रही थी कि हस्बैंड बाल पकड़ के, वो उनके एक मार्केट में हुआ था, तो उस मार्केट में जाना मतलब वो एसोसिएट हो जाता है और वो सारी चीजें ट्रिगर होने लग जाती है। तो that we have to avoid. People may try to avoid remembering or thinking about the traumatic event. They may resist talking about what happened or how they feel about it. Means कि अगर हम उनको पूछे कि तुम्हारी कैसी हालत होगी, तो वो शायद बताना ही नहीं चाहेंगे उसके बारे में। हाँ, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं। और तीसरा इसका एक पार्ट होता है alterations in cognition and mood. उसका क्या मतलब होता है? Yeah, that inability to remember important aspect of the traumatic event, negative thoughts, feeling leading to ongoing distorted beliefs about oneself or others. For example, I am bad, no one can be trusted. And distorted thoughts are about the cause or consequences of the event, leading to wrongly blaming self or others. मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बोल रही थी कि काश मैं बाहर नहीं गई होती, पार्टी में नहीं गई होती किसी, और मुझे कोविड नहीं होता तो अब मेरे बच्चे को भी इफेक्ट हो जाएगा। वो सेल्फ ब्लेम टाइप का आ जाता है उसमें कि शायद ये मेरी वजह से ही हुआ सब कुछ। तो ये भी एक हमको स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक पार्ट हो जाता है। है ना? ओके। सो एंड द लास्ट वन इज अल्टरेशन इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है? Yeah, arousal and reactive symptoms may include being irritable and having angry outbursts, behaving recklessly or in a self-destructive way, being overly watchful of one's surroundings in a suspecting way, being easily startled, or having problems concentrating on sleeping. तो स्लीप डिसऑर्डर्स तो हमने बहुत देखे हैं अभी, जो हमारे को पोस्ट कोविड पेशेंट्स मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, या उन लोग पेशेंट्स को जिनको हुआ भी नहीं है, उनको ये डर रहता है हमेशा कि हमारे को होगा और हमें नींद नहीं आ रही है, ये सोच के कि शायद हो जाए, शायद मुझे कुछ हो जाए। तो पहले हम इन बातों के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है, और बाद में हम इसको कोप करने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी करेंगे। तो इसके बारे में आप बताएं हमें हिंदी में कि कैसे होता है ये, इसका मतलब क्या है ऑल्टरेशंस इन अराउजल रिएक्टिविटी? मींस फिजिकल इफेक्ट इंक्लूडिंग हेडेक्स, स्वेटिंग, जो हम लोग पैनिक अटैक्स बोलते हैं ना, वो सारी चीजें भी आ जाती है। जैसे हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेटिंग होती है, शेकिंग होती है, डिजीनेस होता है, पाँव भारी होने लग जाते हैं, पेन होता है, स्टमक पेन, एक्स, मतलब बहुत सारे चेस्ट पेन होता है। ऐसे चेस्ट पेन होने लग जाता है जैसे उन्हें लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, और वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने भी चले जाते हैं। तो ये सारे फिजिकल इफेक्ट दिखते हैं और सीवियरली दिखने लग जाते हैं। और ऐसे केसेस मेरे पास अभी
अगर 10 पेशेंट है तो 9 पेशेंट इस तरह के आ ही रहे हैं, इतना ज्यादा इन पे फिजिकल इफेक्ट आ रहा है। तो आपको कब पता चलता है कि ये नॉर्मली हो रहा है या इसको, ये बहुत थिन लाइन होती है नॉर्मल और एबनॉर्मल में, तो ये कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल है या ये टुवर्ड्स स्ट्रेस डिसऑर्डर जा रहे हैं? अगर फिजिकल प्रॉब्लम दिखते हैं तो सारे पेशेंट मेरे पास लास्ट में आते हैं। स्टमक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखा के आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के आते हैं, तो सारे एग्जामिन जब बिल्कुल करेक्ट निकलते हैं तब उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके फिजिकली कोई पैथोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आप साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तब वो जब मेरे पास आते हैं, मैं कुछ असेसमेंट देती हूँ और उनके सिम्टम्स से मुझे पता चलता है कि ये उन्हें पैनिक अटैक्स एंड पोस्ट PTSD के सारे सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो मतलब आपका है कि अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पता करना चाहिए whether it is because of the stress or there is some other reason for it, isn't it? Yeah. So next हम बात करेंगे बच्चों में और एडोलेसेंट्स में क्या क्या होता है इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? the inability to speak, मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं, मैं कोविड रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनके घर में पेरेंटिंग बहुत फाइटिंग होती है, एवरी डे फाइटिंग हो रहा है, तो बच्चे स्टैमर करने लग जाते हैं या वो बात ही नहीं कर पाते, वो इफेक्ट घर के पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट बच्चों पे दिखने लग जाता है और वो इनेबल हो जाते हैं टू स्पीक। उन्हें बाहर जाना ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उन्हें लगता है कि उन्हें वो फ्लैशबैक आते हैं, उन्हें लगता है कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे कुछ नुकसान होने लग जाएगा, तो वो इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होने लग जाते हैं कि घर में ही रहना पसंद करते हैं। बेड वेटिंग तो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन है बच्चों में, भी दिखाई देता है। yes. And between the ages of 12 and 18 years, the person may show disruptive or disrespectful, impulsive or aggressive behavior. जैसे बहुत टाइम होता है ना, मैं जैसे अपना ही एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि मैं जब हॉस्पिटल ज्वाइन की थी तो बहुत वहां जाती थी, हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, मेड के साथ मेरा बेटा रहता था, तो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी मेरी मेड, और वो बोली थी कि तुम अपने मम्मी से बोलोगे तो तुम्हें और मारेंगे। तो मेरे घर के मैं जैसी हॉस्पिटल से घर आती थी वो अपना सारा सामान फेंकता था, गुस्सा दिखाता था, डोर बैंग करता था। मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि ये इसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। और ये बिहेवियर उसे मुझे दिखने लग जाते थे। एक्चुअली कोई भी डिफरेंट बिहेवियर अगर बच्चा दिखाता है जो नॉर्मली बिफोर दिखा रहा था, तो वन शुड ऑलवेज सस्पेक्ट कि इसके साथ कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हमने देखा है कि बच्चे कुछ बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, वो निकलते हैं, एडल्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसमें भी वो भी एक साइन हो सकता है स्ट्रेस डिसऑर्डर का। So, इसके risk factors, we have seen that brain scans have shown that hippocampus appears different in people with PTSD compared with others, and the hippocampus is involving in processing emotions and memories, and it could affect the chance of having those flashbacks. That's why we have the flashbacks, like Dr. Munia has explained. Yes. Now, response to stress, the levels of hormones that are normally released in a flight or fight situation appear to be different in people with PTSD. And it has already also been seen that there is a gender role, that is, studies suggest that while men are more likely to experience violence, women have higher chance of having PTSD. So do you agree with all the three, Dr. Munia? Yes, ma'am, ये बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें होने लग जाती है बिकॉज ऑफ हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन में दिखने लग जाता है, और जिसके कारण ये फ्लैशबैक, इमोशनल डिस्टॉर्शन होने लग जाता है और वो बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं। ओके, सो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? किन लोगों में ये ज्यादा मतलब कैसे कहे कि रिस्क फैक्टर है पीटीएसडी का? क्या क्या फैक्टर्स के लिए हम जैसे लैकिंग सोशल सपोर्ट आफ्टर एन इवेंट, सब बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें तो ये तुम्हारे दिमाग की है। कभी कभी लोग बिलीव नहीं करना चाहते कि ये एक्चुअली कितने पेन में है। उन लोग बोलने लग जाते हैं कि मेरे साथ भी तो कभी एक ऐसा हुआ था, तुम्हारा ये सोच है। पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान का इमोशन एक जैसा नहीं होता है, उनका कोप अप करने की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। तो हम अगर ऐसे हैं तो सामने वाला भी ऐसा होगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और वो सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये सारे रिस्क फैक्टर बढ़ने लग जाते हैं। हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और सब्सटेंस यूज, ये तो मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनके मम्मी को था या पापा को था या बुआ को था, नानी को था, तो ये हिस्ट्री अगर है तो इसमें ये सारी चीजें दिखने लग जाती है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो मैं इनिशियली बोली थी,
हाँ, Many patients having we also poor- see that. yes, having poor physical health before or as a result of an event. तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर में आ जाती है. तो हमें कब डॉक्टर को देखना चाहिए? What should we suspect, and then they can take help of a doctor? When symptom persist for a month, then more than a month, अगर हमें ये चीजें मन से ज्यादा दिखने लग जाए कि ये रिपीटेडली हुए जा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि सोचने वाली बात है, एंड वी गो टू डॉक्टर. एंड symptoms are severe enough to prevent the person returning to normal life. And the person consider harming themselves. कभी कभी suicidal ideation आने लग जाते हैं कि मैं suicide कर लूं, hand cut करने लग जाते हैं, या बोलते हैं मेरा अब जीने का मन ही नहीं कर रहा है, खाना loss of appetite हो जाता है, तो उस समय we need to see a doctor. Okay. So this is very important that symptoms are severe enough to prevent the person returning to मतलब उनका उसका जो normal routine है, जगह अगर वो stress उसको normal routine में काम करने नहीं दे रहा है, that time they should see the doctor. And Yes. this is the most important, when somebody even talks of suicide or you see a behavioral change in the person जो normally तो आपके साथ सही था और उसकी behavior में कुछ change किसी event के बाद हुआ है, तो definitely this is a definition of the post traumatic stress disorder. So बहुत सुना है इस बारे में कि आप ये जैसे मेरे भी मरीज आते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं डॉक्टर मुनिया के पास भेज रहे हो, वो क्या मुझे दवाई देगी? मैं कहती हूँ मैं नहीं, वो आपको थेरेपी देंगी. तो ये थेरेपी क्या होती है? व्हाट इज अ सीपीटी, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी, क्या है? मैम, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है ये. हम लोग अपने माइंड में जो चीजें हमारी बन गई है उसको हम लोग उनके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो सारी चीजें आपको किस तरह से फिर से कंस्ट्रक्ट करना है. पर मैं नाउअडेज अभी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीपीटी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैडम मैं अभी उस स्टेज में, उस स्टेट ऑफ माइंड में हुई नहीं जहाँ पे मैं सोच सकूं कि मुझे ये है मेरे प्रॉब्लम और इसे मैं कैसे रिजॉल्व कर सकूं. तो पहले इसका एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इस थेरेपी की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए पहले. यस, जैसे ओसीडी के पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आई थी और बोली मैम मैं सीबीटी अगर आप कराएंगे तो मैं नहीं आऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी और वो सीबीटी करा रहे थे. तो इसका मतलब है कि मरीजों को पता भी होता है कि सीबीटी क्या होता है? हाँ, उन लोग करके आते हैं ना. करके तो वो बोलते हैं कि मैं अगर ऑब्सेसिव थॉट्स में हूँ, वो थॉट मुझे हॉन्ट कर रही है, तो मैं अगेन सीबीटी करके उस थॉट में नहीं जाना चाहती. तो उनको अभी न्यू टेक्निक में अप्लाई करती हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एंड हिप्नोसिस. तो उसके थ्रू मैं, जैसे हम लोग हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं जैसे 3:30 हमारा ये वेबिनार था. तो हमारे अंदर अलार्म बार बार माइंड हमें बोल रहा था कि ये अभी 3:30 होने वाला है, तुम्हें ज्वाइन करना है. सारा काम खत्म करके हम 3:30 ज्वाइन कर रहे हैं. तो हम लोग माइंड को एक कमांड कर देते हैं कि मुझे इस समय ये करना है. मेरा 9 बजे पेशेंट है, मुझे तैयार होके 9 बजे पेशेंट के सामने बैठना है. तो हम लोग एक बार अगर कमांड करते हैं तो माइंड वो हमें कराने लग जाता है. अगर हम बार बार उस थॉट के बारे में सोचेंगे तो माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, बोलकर उसे बिल्कुल हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम में स्टोर कर देगा कि तुम्हें ये होने वाला है, क्योंकि हमने उसे कमांड किया है. जैसे हम लोग देख सकते हैं ना कि मेट्रो में भी अगर हम लोग जाते हैं और अपने फ्रेंड से बात करते हैं या सोशल मीडिया में या ओवर द फोन बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेशन आने वाला होता है जिसमें हमें उतरना होता है, हमारा इमीडिएट ध्यान चला जाता है कि अरे मुझे यहाँ उतरना है, क्योंकि माइंड ने उसे कमांड कर लिया था कि तुम्हें यहाँ उतरना है. सिमिलरली जब हम लोग हिप्नोसिस करते हैं तो माइंड को ट्रांस में लेकर जाते हैं और हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक गेटवे होता है. वो गेटवे डिसाइड करता है कि कौन से बाहर की चीजों को अंदर स्टोर करानी है, कौन से को बाहर निकालनी है. तो सिंपल शब्दों में मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप सारी नेगेटिविटी निकाल के उसके अंदर पॉजिटिविटी ले आते हैं, जो उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस सारे स्ट्रेस से आउट करने के लिए. मैम इमीडिएटली नेगेटिविटी नहीं निकलती है, बिकॉज इट टेक्स 21 days to remove all the negative emotions. Naturally, Dr. Munia, it takes so much of time to take the negativity inside, so it takes time to take it outside as well. हाँ, और ना मैम न्यूरो पाथवे के थ्रू पुरानी चीजें हटा के न्यू चीज स्टोर करने में इट टेक्स 21 days. तो हम लोग वहां पे पेशेंट को कुछ स्क्रिप्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट विश कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या देखना चाहते हो फ्यूचर में,
और उस विश के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को ट्रांस में ले जाकर वो सारे विश इनपुट करते हैं. दैट पेशेंट नीड टू लिसन 21 days विदाउट एनी ब्रेक. दैट्स वंडरफुल. trauma सो को थोड़ा सा हटाने में हमारे को help करता क्लियर हो गया कि ये थेरेपीज में आप क्या करते हो. नेक्स्ट Yeah. जो थेरेपी थी वो है एक्सपोजर थेरेपी. ये क्या होता है? एक्सपोजर थेरेपी इन द सेंस मैम जैसे कि आपको उस जगह पे एक्सपोज किया जाएगा. मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं बोली ना कि वो लेडी मार्केट में जाना ही नहीं चाहती है. हाँ. जाने से उसको वो एसोसिएशन होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रैग किया था. तो यहाँ पे आपको सेफ जोन में ले जाकर आपको उस बारे में बताना, उस सिचुएशन को बार बार रिपीटेडली बोल बोलकर एक्सपोज कराना. Taking talking repeatedly about the event or the confronting the cause of the fear in a safe and controlled environment maybe help the person feel they have more control over their thoughts and feelings. So why we are talking about all these therapies and all, because patients we refer the patients to you people and then they have a fear, पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है. To make it simple, we have we are discussing this so that everybody understands that why we are sending the patients to you. What do you do there? What are these therapies about? And how will this post-traumatic stress disorder be treated? Right? So this is another therapy. So there are some medications as well. So like Dr. Kedare told that selective serotonin reuptake inhibitors such as paroxetine are commonly used. SSRIs also help treat depression, anxiety and sleep problems, symptoms that are often linked to PTSD. Sometimes benzodiazepines may be used to treat irritability and anxiety and insomnia. There is no scope for self-medication. Yes. Do you agree with me, Dr. Yeah, 100% मैम. कभी कभी मैं तो इन मेडिसिन पार्ट में टच करती ही नहीं हूँ. मेरे पास पेशेंट अगर आते हैं और बोलते हैं कि ये मेडिसिन मैं ले लूं, मैं बोलती हूँ मैं कोई नहीं हूँ मेडिसिन देने वाली. आप डॉक्टर के साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और उनसे मेडिसिन के बारे में बात कीजिए. इवन मैं भी नहीं रिकमेंड करती. Very good. So there is no scope for self medication. हम लोग बहुत ध्यान से उन्हीं पेशेंट्स को हम साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है. Otherwise, first of all, we always try that simple techniques of holistic techniques, the therapies, etc. will help the patient so much. Do you recommend कि जो ये holistic type योगा होता है या ये सब चीज़ें होती है, ये हेल्प करती हैं इसमें? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा हेल्प करती है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि हम लोग जब डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे ब्रेन में वो ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन हमारा वो केमिकल में क्रिएट होता है और वो केमिकल हमारे नर्व्स लेते हैं, देन बॉडी में गुड हार्मोन सेंड करते हैं. तो योगा, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है. So we can give some self-help tips like learning about PTSD. जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए ये होता क्या है, कहीं मुझे है तो नहीं और मुझे हेल्प लेना चाहिए. हेल्प लेना बहुत बड़ी बात. उसको ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले एक्चुअली जब भी कोई स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, डॉक्टर मुनिया, यू ओनली हैव टोल्ड मी दैट देयर इज द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज डिनायल. मुझे नहीं है ये चीज. तो इसको आप कैसे समझाएंगे लोगों को? डिनाइल मोड में मैम इसलिए रहते हैं क्योंकि चाइल्डहुड पीरियड से वो सुनते आते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब तुम पागल हो. एंड एवरीबडी लव्स देमसेल्फ. वो अपनी तरफ उंगली उठाना नहीं चाहते. तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अगर मैं ये लोगों के सामने बोलूं कि मुझे ये है, या लोग मुझे बोलने लग जाएंगे कि तुम्हें ये है, तो वो पागल हो जाएंगे, पागल साबित हो जाएंगे, जिसके कारण वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. इसलिए वो डिनाइल मोड में रहते हैं. तो उन्हें ये अवेयर होना पड़ेगा कि ये भी फिजिकल प्रॉब्लम की तरह मेंटल प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है और जिसके लिए डॉक्टर दिखाना चाहिए. ये स्ट्रेस आजकल हमारे में भी है. लाइक वी डॉक्टर्स, वी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस. यू स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जब ये वेव्स आई थी तब तो हम लोग, जैसे ये वाली सेकेंड वेव आई थी, इसमें तो मुझे लगता है मुझे भी बहुत स्ट्रेस हुआ था. एंड I was talking to somebody like this is the self-help tip. That's why I'm telling, finding someone to confide in. जरूर बात करें लोगों से, वो बहुत जरूरी है. Spending time with other people who know what has happened. Letting people know what might trigger symptoms. Breaking down tasks into smaller parts to make them easier to prioritize and complete. Doing some physical exercise like you told. Listening to some quiet music and spending time in nature. Understanding that it will take time for symptoms to go away.
accepting that PTSD is not a sign of weakness but can happen to anyone. That's what we were talking about just now. Yeah. And participating in enjoyable activities that can provide distraction, especially बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के साथ जिनके साथ आपके पास बहुत कम टाइम पहले मिलता था, एटलीस्ट वो टाइम आपको मिल रहा है, तो वो आप करें. तो ये बच्चों के लिए है ये स्लाइड. उनको जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से बहुत परेशान, उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर मुनिया आपका क्या व्हाट डू यू सजेस्ट? मैम कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जैसे ही बैठते हैं वो इमीडिएटली डूज एंड डोंट्स बताने लग जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है. लेकिन बच्चे खुद परेशान हैं. वो अभी इस टाइम में, पेंडेमिक टाइम में, ना नीचे जा पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना फ्रेंड से मिल रहे हैं, ना उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है. तो वो अगर खुद इतने ज्यादा परेशान है और हम लोग बाहर से आके 10 मिनट बच्चे से बात करके डूज एंड डोंट्स बताने लग जाएंगे तो वो बच्चों को कभी हेल्प नहीं करेगा. तो हमें उनके फ्रेंड बन के उन्हें हेल्प करना चाहिए. बिल्कुल. एंड ये हमारे सबके लिए है रिमाइंडर्स दैट whenever we are working we should take breaks, and getting rest is a part of productivity. We should understand these certain tips. It's okay to feel overwhelmed sometimes. Fall in love with yourself. You deserve it. Nothing is as perfect as it seems on social media. And growing up and healing is a process. And your mistakes do not define who you are. So remember this slide. So what are the complications of PTSD, post-traumatic stress disorder? से complication क्या हो जाएगा? मैम डिफिकल्टी विद वर्क और रिलेशनशिप्स. काम में भी मन नहीं लगता है. पेशेंट बोलते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में पड़े रहना अच्छा लग रहा है, या प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ. या रिलेशनशिप में अगर आपके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में वो एंजॉयबल मोमेंट नहीं दे पाएंगे. तो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता है कि हाँ ये किस मुश्किल से दौड़ रहा है, तो इसलिए रिलेशनशिप इश्यूज होने लग जाते हैं. हायर रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, जो पैनिक अटैक्स होते यस, ये हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं. अभी नाउअडेज ये हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था पोस्ट स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. यस. And greater chance of chronic diseases, a possibility of changes that affect the brain, including higher level of the stress hormone cortisol and the decrease in the size of the hippocampus, जो कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं. A brain structure important in memory processing and emotion. Yeah. So these are the complications. Yeah. So we have this slide of managing stress while working from home. तो आप क्या क्या हमें बताएंगे जिससे कि हम जो बच्चे घर से काम कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मैम रूटीन तो सेम फॉलो करना चाहिए हमें. जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि घर से ही क्लास है मेरा, तो मैं 9 बजे उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ, या ऑफिस के लिए मेरा इतना हरी नहीं है, जल्दी जल्दी वाइफ टिफिन बना के नहीं दे रही है, या टाइमली अपने बरमुडा में या शॉर्ट्स में बैठ के या घर के कपड़े में बैठ के हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते. वो नहीं होना चाहिए. जो हम लोग इनिशियल डेज में जो रूटीन पहले करते थे वो रूटीन ही हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा स्लीप पैटर्न भी सही रहे. मैं ऐसे बहुत कपल्स को देखी हूँ कि वो मतलब लेट नाइट तक मूवी देखते रहते हैं और ड्रिंक करते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, बिकॉज सुबह उठने की हरी नहीं होती है. ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, म्यूट कर लिया, कैमरा ऑफ कर लिया, और उसके बाद हम अपना काम जो भी करना है वो कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं लेते हैं. तो वो डिसिप्लिन लाइफ जरूर लेना चाहिए. सेकेंड थिंग कि हम लोग जैसे अगर फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, अपने कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, तो उनसे ओवर द फोन या जूम लिंक के थ्रू या किसी भी गूगल लिंक के थ्रू हमें उनसे बातें करते रहना चाहिए. बिकॉज वी पर्सन्स आर सोशल एनिमल. हम लोग विदाउट सोशल गैदरिंग हम लोग हैप्पी नहीं रह पाते. तो बीइंग अ सोशल एनिमल हमें अपने उस गैदरिंग को मेंटेन करना चाहिए विद ऑनलाइन वर्चुअल जैसे भी हो. अपने हॉबी को मेंटेन करना चाहिए, वो मी टाइम देना चाहिए. बट इसके साथ ये नहीं ढूंढना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये बना रहा हूँ या गाना गा रही हूँ या ड्राइंग कर रही हूँ तो इसमें लोग अप्रिशिएट करें या आउटपुट अच्छा होना चाहिए. इसमें हमें फोकस ना करके हमें अपने कीप योरसेल्फ हैप्पी. दैट्स इट. यस बिल्कुल. So, जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं हमारी, या पोस्टपार्टम लेडीज जिनके पास बच्चे होते हैं, खैर बच्चों के साथ तो उनको काम नहीं करना है,
बट एंटीनेटल जितने होते हैं ना, जो फर्स्ट 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, उनको ये सोचना चाहिए कि एक्सेप्ट दैट यू मे नॉट बी एज प्रोडक्टिव एज ऑलवेज, सो टेक अ ब्रेक. I mean, Yes. you should not be too ambitious for it. There is a lot of time. Prioritize your well-being first. Then Yes. set realistic goals and reward yourself. Create boundaries and minimize the distractions. And connect with your colleagues or your family. That's very important. And set work hours and stick to them. लेकिन हमने देखा है कि ये चीज़ वो फॉलो नहीं करते हैं. ये आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसको कैसे किया जाए? ये सेट वर्क एंड स्टिक टू लर्न. कभी कभी पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, पता नहीं आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद मैं यस ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे काम से बहुत प्यार है, तो बच्चा और काम कैसे मैनेज करूं. तो वहाँ अपने आप को समझाना होगा कि ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक प्रेशर है, पीरियोडिक स्ट्रेस है. कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा. या तो वो उनको वो एक्सेप्टेंस लानी होगी, बिकॉज उनके अंदर सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है. मैंने अक्सर देखा है कि जो ये पेशेंट्स डिलीवरी हो जाती है 6 महीने तक तो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे. जब उनको ज्वाइन करना होता है ना 6 महीने के बाद, उसके बाद उनके टेंशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, बिकॉज प्रॉबेबली 6 महीनों में उनको ये समझ में नहीं आता कि चलो अभी तो कोई काम वाम नहीं है. They don't get that तब तक वो टेंशन नहीं आती है. सडनली वो टेंशन आती है कि अब मुझे ज्वाइन करना है, अब क्या बनेगा. और तब तक बच्चा बड़ा भी हो गया होता है ना, तो उसको मैनेज करना और भी मुश्किल होता है थोड़ा बहुत. तो या अपने जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो आराम से जब मन जहाँ घूम लिए, टीवी जितनी देर देखना है देख लिए, बट आफ्टर प्रेगनेंसी वो सारी चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग रूटीन चेंज हो जाती है. तो सडनली लाइफस्टाइल में चेंज, वो एक्सेप्टेंस इशू आता है. तो वहां उनको समझना होगा कि ये थोड़े दिन की बात है, धीरे धीरे ये बच्चे भी एडजस्ट हो जाएंगे एनवायरनमेंट के साथ और आपको भी पहले वाली लाइफ आ जाएगी. हाँ, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपने मुझे बहुत पहले मेरे साथ डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेसर्स. या लुक एट द स्ट्रेसर्स. हमें स्ट्रेसर्स देखने चाहिए कि कहाँ से ये सारी चीजें हो रही है. हमें मेरा स्ट्रेस फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है, या मैं कहीं ऑफिस में लेट हो जा रही हूँ. तो हमें स्ट्रेसर्स देखने हैं. स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें स्ट्रेस फैक्टर को पहले आईज क्लोज करके फाइंड आउट करना होगा. जैसे मैं कभी कभी पेशेंट को बोलती हूँ कि आपको अपने हॉबी पे फोकस करना है. पेशेंट सडनली बोलते हैं कि मेरी क्या हॉबी है, मुझे आज तक वो अभी भूल ही गई होती है, इवन वो अपनी हॉबी तक भूल गई होती है. बिल्कुल सही कि मेरा क्या हॉबी है मुझे यही नहीं पता. तो यहाँ आपको आईज क्लोज करके या बिफोर स्लीपिंग, जब आपके पास कुछ भी डिस्टर्ब करने वाली चीज ना हो, तो पहले अपने स्ट्रेसर्स फाइंड आउट कीजिए कि वो स्ट्रेसर्स क्या है. एंड देन आफ्टर द स्ट्रेसर्स हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमें किस चीज को फोकस करना है, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. यस, जैसे मैम आपको याद ही होगा कि हम लोग जब जाते थे कॉर्पोरेट में, तो मैं कुछ एक्टिविटी कराती थी कि बॉक्स में सारा सामान हमने रखा, सामान रखा, या बॉक्स में सारा सामान हमें भरना है. तो अगर मैं बॉक्स इतना छोटा है और मैं सामान इतना ज्यादा दे दी और उन्हें चैलेंज दी कि नहीं बाकी लोग तो भर देते हैं, आप भी भरिए, तो उनको वो स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज हम लोग उस छोटे से बॉक्स में सारा सामान नहीं भर सकते. सिमिलरली उसके बाद उनको मैं सेकंड टास्क देती थी कि तुम उतना ही भरो जो तुम्हारे डेली के रिक्वायरमेंट के लिए है. yes. और जो नहीं है उसे जाने दो, लेट गो करो. तो यहाँ पे भी हमें अपने स्ट्रेस को उसी तरह से फोकस करना होगा जो हमारे कंट्रोल में है. जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें प्रैक्टिस करनी होगी लेट गो करने की. और दिस इज नॉट अ मैजिक, वो एक दिन में नहीं होगा. धीरे धीरे एवरीडे प्रैक्टिस करते करते हम लोग उससे सीख जाएंगे कि कैसे नेगेटिव चीजों को लेट गो करना चाहिए. So 2 things from there, that you should first avoid that stressor, identify that stressor, avoid that stressor, alter the stressor if it is in your hands, and priority देखो, priority किस चीज की, prioritize करो अपने चीजें, और definitely अपने लिए समय निकालो. वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, ताकि आप खुश रहो. और हर चीज़ में समय लगता है, तो समय के साथ साथ आपका सब स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. सो हमारे फिजिशियंस को भी बहुत स्ट्रेस आउट हो गए हैं, बहुत बर्नआउट हो गए हैं. तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? मैम ये वाला स्लाइड आप ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. आप ही बताइए. नहीं, मैं तो बताऊंगी कि we are having too much of stress, we had actually, and we might be having in the third wave if at all it comes.
So we have, bureaucratic tasks to do, especially in the government setup, spending too much hours at work, especially in the COVID wards. Increasing computerization of practice ये भी एक stress factor बन गया है, क्योंकि जितना हम फास्ट लिखते थे, अब उतना फास्ट कंप्यूटर पे लिख नहीं सकते. एक उसमें ये सबसे बड़ा gogglization of स्ट्रेस the, है. इनकम नॉट हाई एनफ. हाँ जी मैम. गूगलाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिस भी कर दो. हाँ जी मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम नॉट हाई एनफ. लोगों का ये ख्याल है कि हम लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कमाते नहीं है. ये भी एक अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क वी डू, and feeling like just a cog in the wheel. We don't have too much of time for ourselves. Then too many difficult patients. आजकल patients भी बहुत ज़्यादा because every patient has a right to know about his disease and all. So वो वाला भी थोड़ा सा हमारे को समझना चाहिए कि कितना हमें उनको अवेयरनेस करानी है, और कितना पेशेंट को भी समझना चाहिए कि कितना वो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं. So there should always be a balance between the two. And lack of professional fulfillment, definitely, and compassion fatigue and difficult employer. Besides this, the COVID pandemic, that has increased too much of stress on us. Getting the disease to home, and घर घुसना ही इतना मुश्किल होता था अभी कुछ दिनों पहले कि कहीं मैं खुद डिजीज लेके अपने घर वालों को इन्फेक्ट ना कर दूं. Yes. तो अब आप ये बताइए कि हमें अपने को डिस्ट्रेस कैसे करना चाहिए. मैम सेम है, अपने गोल को सेट करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट जो मैं बोली ना, मुझे लगता है डॉक्टर मुनिया, पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें भी अपनी जो हमारी हॉबीज थी वो हमें याद है कि नहीं. That you told a very nice point. Yes, tell me. और उसके बाद हमें अपने गोल सेट करने चाहिए. टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आप जिस दिन सोचेंगे कि मेरा कल कोई काम नहीं है, आप रात तक मूवी देख रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं, तो उस दिन आपको ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि इतने सारे काम हमारे पड़े हुए, हम उसे कैसे मैनेज करें, कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें. तो वो एक दिन संडे रहता है कि जहां हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. पर ये टाइम मैनेजमेंट अगर डिसमैनेजमेंट में हो गया, मिसमैनेजमेंट में हो गया, तो हम लोग को पूरा कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वीकडेज में. एंड पेशेंट्स इंफॉर्मेशन होना चाहिए. सेल्फ टाइम जो कि आप बता रहे हैं ना, हॉबी का सेल्फ टाइम होना चाहिए कि मेरे लिए मुझे क्या पसंद है. कई लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा ही टाइम चाहिए, जैसे वॉक करना. मुझे नीचे एक फ्रेंड मिली थी, वो बोल रही थी कि मैं पूरे दिन तो घर का काम करती हूँ, ये मेरा टाइम है, ये मैं अपने लिए करती हूँ. तो कई लोगों को ये अच्छा लगता है. हाँ, ये रहता है कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, और वो अप्लाई करते हैं. कई लोग सैक्रिफाइस में ही रह जाते हैं कि नहीं मेरे पास तो टाइम है, अभी ये है, नहीं करना चाहिए, बाद में रहोगे. बिल्कुल. And good, listen to some good music, good food. Yes. Good food बहुत अच्छा है. Good food is good, but nutritious food. ये नहीं कि आप खाते जाओ और अपना वजन बढ़ाते जाओ. Good And music exercise. तो गाना सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर जिनको नहीं सुनना पसंद है, उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है. तो ये अपने अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजें चूज करनी पड़ेगी. ठीक है. एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. फैमिली टाइम और फैमिली टाइम. Thank you so much, Dr. Munia. Thank you so that much. was wonderful, all inputs from you. And I stop share after that, and I want everybody to give us a take-home message. जो भी हमने 3 series करी है. So, Ma'am, Dr. Ragini, would you like to sum up everything? So first of all, I will say it's a mesmerizing session, Chandan and Munia. Thank That's you, why ma'am. I always keep your session at the end, because if we keep in the initial phase, then we are not able to speak even anything. It is so mesmerizing, and I think, thank you so much. Thank you so much, the delegates. Even today, 30 plus webinars are going on, and the great webinar by IMA. Even we have a dedicated 50 plus audience. Thank you so much for being with us today, and I hope we have done a justice with your precious time for this deliberation which we had. And we are again coming with nurturing birth series on the 15th, and that day Munia will show you the stress management in practical way also. And that series is totally dedicated to our pregnant mothers and mothers to be or grandmothers to be, to also understand the modern
medicine, how we do the antenatal care today, and what all the medical jargon which you come across, and you are very much put off that in what language we are talking, but we have to talk in the medical jargon only most of the time. So in this particular series on the 15th, rather I can say every month, third Thursday of every month, we are coming with a series of the nurturing birth, that is journey from conception to delivery and beyond. And we will discuss one by one topic. And the topic of the next discussion is how we have changed the antenatal care, the physical exercise and the mental health we are going to touch in that. Welcome and join us with your patients. Please do forward to your patients and the non-medical contacts. It will be a great service to us. I think there are some questions and by please the audience. Continue with the questions. Yes. There was one question that please give some tips for the ladies at home who are doing work from home. I think we have already discussed that slide. And home course too, the homemakers. Homemakers also should not, take, like Dr. Munia said, they should not make it as a, their me time as their normal khana banane wala time. So beyond the home course, they should take out time for exercise, for doing something else other than cooking or doing some other work at home. जिनमें उन्हें कुछ खुशी डिफरेंट, मिले। हाँ कुछ डिफरेंट करें, या अगर आपको खुशी मिलती है कुछ नॉर्मल एक नया डिश बनाने में, तो वी डोंट माइंड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेंट आउट्स फॉर यू। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। YouTube इज द गुड एकेडमी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम लोग YouTube से बहुत कुछ सीख पाते, इवन डांस, म्यूजिक, ड्राइंग। तो YouTube चला के 45 मिनट्स हमें अपने लिए मी टाइम देना चाहिए जो हम सीखना चाहते हैं। और म्यूजिक भी जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे, अगर किसी को इंग्लिश म्यूजिक पसंद होता है, किसी को बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी को अपने ऊपर थोपे वो म्यूजिक। जिस म्यूजिक में आपको जॉनर में पसंद है आप वही कीजिए जो आपको पसंद, आपको जो चीज पसंद है आप कीजिए। यू वांट टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, टाइम विद हस्बैंड और whoever, you do that and then good positivity will come. वो आईज क्लोज करके सोचना पड़ेगा कि वो मुझे क्या खुशी देती है। ये सोचना उसी को पड़ता है जो अपने को मी टाइम नहीं देता है, जिसको जो देता है उसको पता है उसको किससे मी टाइम मिलता है। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही आज। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनिया, बताना इट वाज वंडरफुल। डॉक्टर उज्ज्वला, यू वांट टू ऐड ऑन दैट समथिंग? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा केक बनाया गया पैंडेमिक में, ये देखा गया है कि कुछ 15 लाख केक बने हैं पैंडेमिक पीरियड। सबने केक बनाया, तो जरूरी नहीं कि आप पैंडेमिक ओवर हो गया तो केक ना बनाएं, जिसमें आपको खुशी मिलती है। जैसे अभी मेरी बात करें तो मेरे पास बच्ची नहीं है, सो ऑल टाइम इज माय मी टाइम। आई सी पेशेंट मॉर्निंग इवनिंग and rest of the time I go to gym, exercising. Even if somebody is feeling कि मैं obsessed with the heavy weight या obese है, she feels that low self esteem यदि उसको लगता है, so you can at any age group you can join. Well, that reminds me that certain doctors they do enjoy their own work, when they are with patients they enjoy that. So that is what, अगर उनको ये लगता है। पेंटिंग कब करती हैं आप? पेंटिंग भी तो बहुत खूबसूरत करती हैं। तो उनको मरीज देखने में ज्यादा मजा आता है। So you just have to close your eyes and see with what gives you pleasure. So that's what is important. With that we end this series of COVID stress, and I hope the third wave doesn't come, and if it comes then it will be COVID stress 4 number. So with that positivity, thank you so much everybody, and thank you Dr. Deepika from Jackson Pal, Dr. Vipin. We have had wonderful times with you, and see you very soon. Yeah, I just wanted to thank everybody. In the fight against coronavirus, we have Lycorate soft gels, which provide the required defense to boost the immunity, and also available sugar-free Lycorate Preg sachet in orange flavor, containing L-arginine, DHA, and lycopene to prevent pregnancy complications. Start in the second trimester. Next, we have Equilibrium tablets of chlordiazoxepoxide 10 mg during the COVID times. Treat anxiety with Equilibrium tablets, and newly launched Narical tablets containing calcium citrate malate, vitamin D3 and folic acid.
My teammates, Dr. Vipin Tyagi and Mr. Amit Saxena, join me, Dr. Deepika, to thank everybody. And we look forward to see you again next Thursday. Next Thursday being the program for recurrent pregnancy loss, which is brought to you by our newly launched Pro Retro tablets of dydrogesterone 10 mg by Jackson Park. So thank you all very much. Thank you so much. See you Thank again. you so much. Thank you. Thank you, Dr. Manya.